Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study English for class 2. Our chapter is chapter number 9, Good Deeds. First, we'll start reading of it. Ahmed writes his diary every day. I'll translate it for you side by side. Ahmed अपनी डायरी रोज लिखता है. Today his class teacher shared an incident from the life of a young boy. आज उनकी क्लास टीचर ने एक छोटे बच्चे का वाक्य उनके साथ शेयर किया. इट इज इंस्पायर्ड हिम अ लॉट एंड ही नोटेड दिस इंसिडेंट इन हिज डायरी. इसने उसे बहुत मुतासिर किया और उसने इस वाक्य को अपनी डायरी में लिख लिया. लेट्स रीड व्हाट ही रोट. आइए हम पढ़ें उसने क्या लिखा. A long time ago, there lived a small boy. बहुत अरसा पहले एक छोटा लड़का था. His name was Bayazid Bastami and he loved his mother very much. उसका नाम बयाजीद बस्तामी था और वह अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था. Once his mother fell very ill and had to stay in bed. एक दिन उनकी अम्मी बहुत बीमार हो गई और बिस्तर पे पड़ गई. One night she awoke. रात को वो जागी with thirst प्यास से and called out to her son to bring her a bowl of water. उन्होंने अपने बेटे को बुलाया कि एक प्याला पानी का दे दो. The young boy tried to pour out water from the pitcher. बच्चे ने घड़े में से पानी डालना चाहा, बट इट वॉज एम्प्टी, लेकिन ये खाली था. ही वेंट टू अ कैनाल नियर बाय टू फच वाटर. वो साथ वाली नदी पर पानी लेने चला गया. When he came back, जब वो वापस आया with water पानी लेकर, his mother had to gone to sleep again. उसकी अम्मी वापस सो चुकी थी. He was not sure what to do. उसे समझ नहीं आया क्या किया जाए. Should he wake her up? क्या उसे जगा दें? Or wait until she awake? या इंतज़ार करें जब तक वो जाग जाए. Or leave the water by her bedside and go back to bed himself. या उनके बिस्तर के साथ पानी रख के वो खुद जाकर सो जाए. He decided to wait until she awoke. उन्होंने इंतज़ार करने का फैसला किया जब तक वो जाग जाती. Minutes passed, hours passed, the night passed. मिनट गुजरते गए, घंटे गुजरते गए, रात गुजर गई. एंड स्टिल द स्मॉल बॉय वेटेड पेशेंटली. छोटा लड़का सब्र से इंतज़ार करता रहा. विद वाटर एट हिज मदर्स साइड. पानी लेके अपनी माँ के साथ. व्हेन हिज मदर अवोक. जब उनकी वालदा जागी. शी ड्रैंक वाटर. उसने पानी पिया. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर. तुम कब से यहाँ खड़े हो. शी आस्क्ड. यू हैवंट बीन देयर ऑल नाइट. तुम सारी रात से तो यहाँ नहीं हो. हैव यू. क्या ऐसा ही है. यस मदर. जी माँ. ही रिप्लाइड. उसने जवाब दिया. आई हैव बीन हेयर सिंस यू आस्क्ड मी टू ब्रिंग यू सम वाटर. मैं उस वक्त से यहाँ हूँ जब से आपने मुझसे पानी लाने को कहा. His mother was deeply touched by his patience. उसकी अम्मी को उसका सब्र बहुत पसंद आया. And asked Allah subhanahu wa ta'ala to pour his blessing on her. और अल्लाह ताला से दुआ की कि उसके बेटे पर अपनी रहमतें नाजिल करे. The same boy grew up to be a great saint. यही लड़का बड़ा होकर बहुत बड़ा सूफी बुजुर्ग बना. Called बयाजीद बस्तामी. जिनको बयाजीद बस्तामी कहा जाता है. तो बच्चों, ये बयाजीद बस्तामी एक बहुत बड़े हमारे सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं जिनकी ये कहानी या एक छोटा सा वाक्य उनके टीचर ने बच्चों को सुनाया है कि कैसे उनकी माँ ने पानी मांगा रात के किसी पहर और पानी नहीं था तो घर से बाहर पानी लेने चले गए. और जब पानी लेके आए तो उनकी वालदा सो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र के साथ उनके पास इंतज़ार किया कि कहीं वो दरमियान में जाग के पानी ना मांग ले. सारी रात वो खड़े रहे. तो जब उनकी वालदा ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि आपने पानी मांगा था इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ. उनकी माँ उनके सब्र से बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने उनके हक में दुआ की. वही दुआ उनको लगी और वो बाद में एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग बन गए. So this is the passage that Ahmed wrote in his diary, an incident of a small boy that inspired him a lot. I hope you have understood all. Let's go move on to the vocabulary. Read the given words with their meanings. आप ये words पढ़ें और इनके मतलब को समझें. ये मुश्किल लफ्ज़ जो दिए गए हैं इनमें सबसे पहला word है pitcher. पिचर कहते हैं कंटेनर फॉर होल्डिंग एंड पोरिंग लिक्विड्स. एक ऐसा बर्तन जिसमें पानी रखा जाता है और उसमें से पानी निकाला जा सकता है. मतलब एक उर्दू में इसको घड़ा या कोई पानी रखने का बर्तन कहा जाता है. पेशेंस. टू एक्सेप्ट अ डिले क्वाइटली एंड विदाउट कंप्लेनिंग. पेशेंस सब्र या किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करना. दैट इज़ अ पेशेंस. ब्लेसिंग गुड विशेज रहमतें. अ स्पेशल फेवर और मर्सी. रहम अल्लाह ताला की रहमतें उनको हम ब्लेसिंग्स कहते हैं. सेंट अ वेरी गुड काइंड एंड होली पर्सन. एक बहुत अच्छे रहम दिल और बुजुर्ग आदमी को सेंट कहा जाता है.
Then we'll go to the cardinal numbers. Cardinal numbers are the numbers that you have already learned in your maths. These are called cardinal numbers, and there are the spellings of it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. These are the cardinal numbers that you have to learn for next exercise. That is, find and circle the cardinal numbers in the given word search. This is a word search block is given, and here you have to find the cardinal numbers and encircle them. I have done it for you, so you have to do it by yourself. Just watch at it and do it in your book by yourself. The next exercise is about comprehension. Comprehension मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, ये होता है कि आपने इस पैसेज को कितना समझा है. जो पैसेज आप पढ़ के आए हैं पीछे, इंसिडेंट ऑफ अ स्मॉल बॉय, उसको आपने कितना समझा. इन क्वेश्चंस के आंसर्स को जब आप वहां से ढूंढ के लिखेंगे, that is that you are going to comprehend the passage or comprehend the lesson. It is about the passage. The questions are given and you have to write their answers. So I have solved it for you, but please try to solve it by yourself as well. The first one is, what was Ahmed doing? Ahmed was writing his diary. Ahmed क्या कर रहा था? वो अपनी डायरी लिख रहा था. Question number 2, who shared an incident from a young boy's life in the class? क्लास में किसने young boy का incident share किया था? The teacher shared an incident from a young boy's life in the class. Question number 3, who was Bayazid Bastami? Bayazid Bastami कौन थे? Bayazid Bastami वो छोटे बच्चे थे जो बाद में एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग बने. तो हम बताएंगे कि Bayazid Bastami was a great saint, एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग थे. What did Bayazid Bastami decide when his mother went to sleep again? Bayazid Bastami ने क्या फैसला किया जब उन्होंने अपनी वालदा को दोबारा सोता हुआ पाया? Bayazid Bastami decided to wait when his mother went to sleep again. Bayazid Bastami ने इंतजार करने का फैसला किया जब उन्होंने देखा कि उनकी वालदा दोबारा सो चुकी हैं. What did you learn from this incident? इस इंसिडेंट से आपने क्या सीखा? We learned from the incident that good deeds never go unrewarded. अच्छे अमाल कभी भी ज़ाया नहीं होते, उनका इनाम ज़रूर मिलता है. The next is about phonics. फोनिक्स में आज आपने साइट वर्ड्स पढ़ने हैं. अब देखिए, छोटा सा रीड मी का ब्लॉक है. रीड मी के ब्लॉक में साइट वर्ड्स के बारे में लिखा हुआ है. साइट वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट वी मेमोराइज बाय साइट. साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको देखते ही आप याद कर लेते हैं या आपको पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड लिखा हुआ है. दे आर नॉट अबाउट टू मेमोराइज देम. सो ये कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं. द, यू, सेड, हिज, पीपल. सच वर्ड्स आर कॉल्ड साइट वर्ड्स, जो छोटे छोटे से लफ्ज होते हैं जिनको देख के आप उनको याद कर लेते हैं. So this is about the phonics. Next exercise is about reading. Read the given map key. आपको मैप की दी हुई है. मैप की है बेटा, देखिए छोटे छोटे से आपके पास तस्वीरें बनी हुई हैं. These are the map keys. जो आप साथ वाली पिक्चर में ये तस्वीरें जगह जगह लगी हुई हैं. जैसे मैप की में पहला है डस्टबिन, फिर स्टॉप का साइन है, फिर बेंच है, फिर स्लाइड है और स्विंग्स हैं. ये देखिए, ये पार्क में ये चीजें लगी हुई हैं. Now you have to complete the steps below. Complete the steps में आपके 1, 2, 3 steps दिए हुए हैं. इन steps में उनसे आपसे पूछा है draw a circle around the swing. जहां आपको swing नजर आ रहा है उसके गिर्द आपने सर्कल लगाना है. Draw a square around the dustbin. डस्टबिन को आपने स्क्वायर में बंद करना है. Draw a triangle around the stop sign. और जहां पे stop sign है उसको आपने triangle में बंद करना है. So this is done for you, but first you have to try it do by yourself. The next portion is about grammar, and in grammar we are going to learn about use of can and cannot. First we'll read the read me block. इस ब्लॉक में देखिए लिखा है can is used to show the ability to do something. वो काम जो आप कर सकते हैं उसको बताने के लिए आप can का इस्तेमाल करते हैं. And cannot is used to show inability to do something. और cannot आप इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई काम नहीं कर सकते. inability है मतलब आप इसको नहीं परफॉर्म कर सकते, तो उसके लिए आप cannot यूज करते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं. रीड द सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को पढ़े. नोटिस द यूज ऑफ कैन एंड कैन नॉट. फिर आप कैन और कैन नॉट का यूज देखें किस तरह से यूज हुआ है. द फर्स्ट सेंटेंस इज ही कैन स्टडी हार्ड. वो सख्त पढ़ सकता है, सख्त लफ्जों को भी पढ़ सकता है, सख्त मेहनत से भी पढ़ सकता है, वो कोशिश करके भी पढ़ सकता है. सो ही कैन स्टडी. आई कैन डेकोरेट माई स्कूल. मैं अपने स्कूल को सजा सकती हूँ. मतलब आई कैन डेकोरेट माई स्कूल, आप अपना सजने से संवारने वाला काम कर सकते हैं. दैट इज यू कैन डू इट. सो दिस इज द एबिलिटी टू वर्क. यू विल यूज द कैन. वी कैन नॉट स्विम. हम तैर नहीं सकते. यू कैन नॉट स्विम. आप पानी में नहीं तैर सकते, तो आप क्या होते हो? कैन नॉट स्विम. आई कैन नॉट ड्राइव अ कार. मैं कार नहीं चला सकती, तो दैट इज इनएबिलिटी, तो आप उसको
कैन नॉट यूज करेंगे। नेक्स्ट पेज इज द एक्सरसाइज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन और कैन नॉट। अब ये ब्लैंक्स आपको कुछ दी हुई हैं, इन ब्लैंक्स को अपने कैन और कैन नॉट के यूज से आपने फिल करना है। जैसे वी डैश सी द स्टार्स एट नाइट, रात को आप स्टार्स देख सकते हैं तो विल यूज कैन, वी कैन सी। अ लाइन कैन नॉट फ्लाई, अब आपको पता है लाइन इज एन एनिमल, फोर लेग्ड एनिमल दैट कैन नॉट फ्लाई, तो उसको आपने कैन नॉट लिखना है। चीता कैन रन फास्ट, चीता तेज भागता है, you'll use can in it. Fish can swim in water, मछली पानी में तैर सकती है, you'll use can in it. We cannot see in the dark, हम रात को नहीं देख सकते, that is cannot. Elephant can carry a heavy load, elephant heavy load उठा के चल सकते हैं. So this is the use of can and cannot. I hope you have understood it all. So next is about, there are some words given to you. These are action words. Now you are going to make sentences with the given action words. ये कुछ words हैं, these are action words, मतलब ये verbs हैं, play, swim, fly, drive, jump, these action words. आपने can और can not को use करके इन words को, इन action words को sentences में use करना है. Try to make your own sentences, don't follow me. I have written some samples for you, but this is a sample. If you can make your own sentence, this will be appreciable, and you have to try to make your own sentences. So what I have written for play, I can play football. Swim, Ali cannot swim. Fly, the birds fly in the sky. Drive, children cannot drive the car. Jump, the cat can jump from the tree. So these are the sample sentences. You can follow these sentences to make your own sentences. From the portion of grammar, we are going to follow now punctuation. Punctuation रीड मी के ब्लॉक में पढ़िए तो a full stop is used to end at the end of a complete sentence. जब आप सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं उसके आखिर में आप फुल स्टॉप डालते हैं. A question mark is used at the end of the question. जो कोई क्वेश्चन होगा आप इस्तेमाल करेंगे उसके आखिर में आप क्वेश्चन मार्क डालेंगे. An exclamation mark is used to express sudden feelings or emotions. एक्सक्लेमेशन मार्क आप यूज करते हैं जब आप सडन फीलिंग्स या कोई इमोशंस को शो करते हैं. ये आपकी पंक्चुएशन है. पंक्चुएशन हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस को लिखने में. जो आप सिंपल सेंटेंस लिखेंगे उसको आप कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे और एंड में आप फुल स्टॉप डालेंगे. अगर आपने क्वेश्चन सेंटेंस लिखा है तो उसके एंड में आपने क्वेश्चन मार्क डालना है. और अगर आप अपनी कोई फीलिंग्स शो कर रहे हैं तो आपने जो आपकी फीलिंग्स का वर्ड है उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है. फिर नेक्स्ट वर्ड दोबारा कैपिटल होगा और एंड में भी एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे. सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. ये 3 पंक्चुएशन मार्क्स हमने आज यूज किए हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. अब इन सेंटेंसेस को हम पढ़ रहे हैं और इसके एंड पे देखिए हम कि आपके पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से लगे हैं. द फर्स्ट सेंटेंस इज आई वॉश्ड माई फेस, फुल स्टॉप, सिंपल सेंटेंस है. अहमद इज माई फ्रेंड, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, एंड में फुल स्टॉप आया. वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन सेंटेंस है, आप कहाँ रहते हैं, इसके आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क डाला. व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्वेश्चन सेंटेंस, हमने आखिर में क्वेश्चन मार्क डाला. हुर्रा, हुर्रा खुशी का इजहार है, तो ये आपकी इमोशन है, फीलिंग है, आपका एहसास है, तो उसके आगे हमने पहले एक्सक्लेमेशन मार्क डाला. फिर नेक्स्ट लेटर हमने दोबारा कैपिटल किया. वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया. ये खुशी की फीलिंग है, फीलिंग सेंटेंस है, तो इसके एंड पे आपने दोबारा एक्सक्लेमेशन साइन डाला. वाओ, वाओ हैरानी का एक फीलिंग है, इसके आखिर में आपने एक्सक्लेमेशन मार्क डाला. वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे, नेक्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे और एंड में द सीन इज सो ब्यूटीफुल, फिर आपने एक्सक्लेमेशन साइन यूज किया है. सो टुडे यू आर गोइंग टू लर्न 3 पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. ये सेंटेंसेस आपने पढ़े, दीज आर द सैंपल सेंटेंसेस. नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है जिसमें आपने पुट अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसमें आपने फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है. द फर्स्ट वन इज वाओ, वाओ हैरानी है, एक्सक्लेमेशन मार्क, दैट का टी कैपिटल होगा, दैट इज गुड न्यूज. गुड न्यूज के बाद आप फुल स्टॉप भी डाल सकते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क भी डाल सकते हैं, बोथ आर राइट. हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन सेंटेंस है इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क डाला. आई एम 8 years old,
सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप डाला. व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं. हमने क्वेश्चन पूछा है तो एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क डाला है. So this is an exercise for you. Try to do it by yourself. I hope you have understood about the punctuation and punctuation marks. This is the writing style and how do you write the question sentences or positive sentences. उनको अलग करने के लिए क्या हम यूज कौन से punctuation marks यूज करते हैं. तो आज हमने 3 punctuation marks सीखे हैं. Full stop, question mark and exclamation mark. The next is about writing. आपके पास कुछ एक तस्वीर दी हुई है. चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ क्यू. बच्चे एक कतार में खड़े हैं टू गेट ऑन द बस, बस पे चढ़ने के लिए. लुक एट द पिक्चर. आपने पिक्चर को देखना है. आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग ऑर्डिनल नंबर्स. ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जैसे हमने कार्डिनल नंबर्स पढ़े 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक, वो हमारे कार्डिनल नंबर्स हैं. जब आप 1 से लेकर 10 तक इन या आगे भी जो वर्ड्स हैं उनको आप पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम ऑर्डिनल नंबर्स का नाम देते हैं. जैसे जो फर्स्ट पहले नंबर पे है उसको हम फर्स्ट कहते हैं, दूसरे नंबर वाले को सेकंड कहते हैं, तीसरे नंबर को थर्ड कहते हैं, 4 वाले को फोर्थ कहते हैं, 5 वाले को फिफ्थ. तो 1 2 3 4 दीज आर कार्डिनल नंबर्स. व्हेन दे विल बिकम फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वो ऑर्डिनल नंबर्स बन जाएंगे. सो आपने ऑर्डिनल नंबर्स को यूज करके इन क्वेश्चंस का आंसर देना है. I have done it for you. Read them and do it again by yourself. Let's read it. Who is first? Atif is first. अब देखिए बच्चों के नंबर लिखा हुआ है और नीचे उनका ऑर्डिनल नंबर भी लिखा हुआ है. नाम ऊपर है बच्चे का, नीचे उसका ऑर्डिनल नंबर है. Who is second? Rabia is second. Who is third? Raza is third. Who is fourth? Mehvish is fourth. Who is fifth? Musa is fifth. Who is sixth? Shazia is sixth. Who is seventh? Ijaz is seventh. Who is eighth? Sana is eighth. Who is ninth? Ali is ninth. Who is tenth? Maria is tenth. So we have used the ordinal numbers to answer these questions. The next is about write dates and captions in the given blanks. देखिए डायरी का एक पेज दिया हुआ है, उसमें लेफ्ट साइड पे उसने आपको फिल किया है कि डेट उसने दी 26/12/2017. क्लास वर्क में वो यूनिट नेम लिखेंगे, डायरी वो मंडे की लिख रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैं इस डेट को फिल कर रही हूँ 29/12/2020 को, तो मैं डेट डालूंगी 29/12/2020. क्लास वर्क में मैं अगर यूनिट गुड डीड्स पढ़ रही हूँ तो मैं उसका नेम लिखूंगी गुड डीड्स. डे हमारा 29 को ट्यूसडे था तो उसको हमने Tuesday likha. So this is the example how you are going to fill the diary captions. Third exercise for the writing is think and write 4 to 5 sentences about any special incident of your life. आप अपनी लाइफ का कोई भी स्पेशल इंसिडेंट इसमें लिखेंगे. So I have written one for you. Read it and write for yourself your own incident or any incident you like have what happened to you or any other you want to write. So what I have written, a day before yesterday, I was playing in the park. I saw a bird's baby fallen under the tree. The bird was flying round and round on the baby. I put up the baby and put it in its nest. The mother bird quickly went near its baby and sat calmly. मैंने एक छोटा सा इंसिडेंट लिखा है कि बेबी बर्ड कैसे नीचे गिर गया था, तो उसको उठा के जब उसके घोंसले में रखा गया तो उसकी माँ को कैसे सुकून मिल गया. So this is the unit of 9 good deeds. I have completed it for you and tried to comprehend it for you. I hope you have understood it all. So please, if it can help you, I'll be so glad. Thank you.